Hello everyone, this is Sangeeta Bhattacharjee, and today I will teach you chapter 2 of the Indian Contract Act 1872. So, chapter 2 of Indian Contract Act 1872 deals with of contract, as you can see here, of contract, voidable contract and void agreement. So, section 10 deals with what agreements are contract. उसका मतलब है कौन कौन सा एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है. सो दे इज अ सेइंग दैट वी गेट इन द बुक्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सो सेक्शन 10 क्या बोल रहा है देखिए. सेक्शन 10 lays down the provision that all agreements are contract. All agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract and a lawful consideration with lawful object. That means free consent. Number one, free consent is important. Okay, consent. Number two, lawful consideration. Lawful consideration. And lawful. Number three, lawful object. So these are important key points that you have to remember while reading this section. That is, free consent is important, then lawful consideration is important, and the next is lawful object. Okay, now moving to next section, that is, who are competent to contract. So as per this section, every person is competent. सभी person competent है contract के लिए. Who is of the age of majority. That means majority is the key point. Okay, majority according to the law to which he is subject. ठीक है, and is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. So who are competent contract? Number one should be that is majority. Okay, majority. Number two condition is that he should be of sound mind. Only these two conditions are compulsory. ठीक है. Now section 12, what is a sound mind for the purpose of contracting. So the provision is a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. दैट मीन्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ए पर्सन, उसी को साउंड माइंड बोला जाएगा जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, माने जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है एंड उसको पता है दैट ही इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसको पता है कि सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एंड उसको ये रेशनल जजमेंट है उसको कि वो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके इंटरेस्ट के ऊपर. ठीक है. सो देयर नंबर टू कंडीशंस आर देयर. नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू. नंबर वन इज a person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make contract when he is of sound mind. That means अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड में रहता है, ठीक है, बट ओकेशनली वो साउंड माइंड में भी होता है. सो इन दिस केस वो पर्सन क्या कर सकता है बोलिए तो
in this case, if that person can make on contract only when he is of sound mind. जब वो साउंड माइंड में रहेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और जब वो साउंड माइंड में नहीं रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। नाउ सेकेंड कंडीशन इज ए पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, ओके, बट occasionally of unsound mind may not make contract when he is of unsound mind. नंबर 2 बोल रहा है कंडीशन कि जो पर्सन यूजली साउंड माइंड में रहता है, ठीक है, यूजली क्या है वो साउंड माइंड में रहता है, बट ओकेशनली क्या होता है उसको वो अनसाउंड माइंड में चला जाता है। तो इधर यही बोल रहा है कि वो पर्सन कैन नॉट मेक दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। जब वो साउंड माइंड में रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ही कैन ओनली डू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड। दैट मीन्स जब वो अनसाउंड माइंड में रहेगा वो नहीं कर सकता है, लेकिन जब साउंड माइंड में आएगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन, that is section 13, consent. This is very important in our Indian Contract Act 1872. So section 13 defines what is consent. The provision is two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. कंसेंट मीन्स अगर कोई दो या दो से ज़्यादा पर्सन किसी भी चीज़ के ऊपर एग्री करता है, ठीक है, इन द सेम सेंस, सेम सेंस में दोनों पार्टी एग्री कर रहा है और दो से ज़्यादा वो एग्री कर रहा है, वो क्या वो सब कंडीशन कंसिडरेशन क्या क्या है सब कुछ एग्री कर रहा है, तो उसी को हम लोग एज पर सेक्शन 13 उसको कंसेंट बोलेंगे, ठीक है। Now moving to next section, that is section 14, free consent defined. Abhi this is very important term in our Indian Contract Act 1872, that is free consent. So section 14 lays down the provision regarding consent, that is consent is said to be free. Consent तभी free होगा when it is not caused by, we have to remember, not caused by, not caused by, not caused by। नंबर वन, नॉट नंबर वन क्या है, नंबर वन है हम लोग का कोर्शन, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में, ठीक है। तो कोर्शन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नंबर वन कंडीशन क्या है, कोर्शन, दैट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन। नंबर टू इज अनड्यू इन्फ्लुएंस as it is defined under section 16 of the said act. Now third condition is fraud, as it is defined under section 17 of this Indian Contract Act 1872. Okay, next, misrepresentation. Misrepresentation as defined under 18. Okay, now next, number 5, that is mistake, subject to the provisions of section 20, 21 and 22. So we will read these sections later on, okay? So if you like this lecture, please like this video and subscribe this channel. Thank you.